नमस्कार। हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि सर्वाइवल कैंसर के लिए इंडिया ने वैक्सीन तैयार कर लिया है। शुरुआती स्टेज में ये HPV वैक्सीन 9 से 13 वर्ष की लड़कियों को दिया जाएगा। बाद में एज ग्रुप का दायरा बढ़ाया जाएगा। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर में जहां 1.3% महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं, वहीं इंडिया में यह आंकड़ा लगभग डबल यानी 2.5% है। ऐसा क्यों है? भारतीय महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? यही सब जानने के लिए हमने आज अपने शो में देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट को आमंत्रित किया है। We kickstart this particular episode with yoga on PCOS. तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है PCOS. It's spreading like anything, like how you are talking about diabetes, how you are talking about thyroid. Today we are also talking about PCOS. PCOS, as the name suggests, it is polycystic ovarian syndrome. ये उसका फुल फॉर्म होता है। पॉली मतलब many, मतलब ज्यादा, सिस्टिक मतलब सिस्ट, ओवेरियन ओवरीज में होता है, सिंड्रोम मतलब ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। There are too many cysts in the ovaries. Okay, what does polycystic ovarian syndrome does? One, it increases your testosterone level in a woman. Okay, so women are supposed to have low or no testosterone, but it increases the testosterone. Now, what happens with increased testosterone? One, there is chances that you may miss your periods or there will be irregular periods. The second is there can be lot of hair in your body. So women develop hair in their face and it's very disheartening to them. Okay, there are lot of psychological changes as well, mood swings, lot of mood swings. Okay, then there is also insulin sensitivity increases. So what happens, there are chances that if you have PCOS, you get into diabetes and you get into thyroid. So it becomes a vicious circle and it is very difficult to come out of this circle. And now, because the women are not able to come out of this circle, and not only women, in teenagers, so nowadays lot of teenagers are suffering from PCOS. So it is very important that once the PCOS come, once get it diagnosed. So go to your gynecologist or obstetrics and get it diagnosed that you have PCOS. Now, there are two types of PCOS. Okay, दो टाइप के लोग को PCOS होता है। एक कि जब आप जब बच्ची 13 साल की 14 साल की होती है और उसको पीरियड्स होना चालू होता है तो बहुत इरेगुलर होता है। There are chances she is genetically blessed with PCOS. Okay, that I am not saying PCOS is blessing, but what I am saying is that it may be from the start of her periods. Okay, the second type of PCOS which you develop on the way is, like for example, the child is very active, 8th class, 9th class, suddenly 10th class comes, the child becomes completely inactive, not sleeping properly for 8 hours, eating all junk or eating at irregular intervals and all that, and consuming less water. So what happens is this lifestyle complete change, or generally young people who are just finished the college and just went to the job, and now they have irrational timing of work, and they go for parties, so no sleeping, again irregular food. What happens? You develop PCOS. Okay, that is basically lifestyle oriented PCOS. Okay, so let's demonstrate the asana. As I said, hip openers are very, very good. So you can actually open up your hip in butterfly or Buddha Konasana. Okay, so you can bring your ankle towards your groin area. If
you are, trying to conceive and not able to conceive, and you are in a you are a PCOS patient, then if you're trying to conceive, then your ankle should not cross your knee line. Okay, so it should be slightly away. Okay, but otherwise you can bring it as near to you as possible. Keep breathing in and out and try to open up your hip as much as possible. Very important is you don't hold your breath. Yoga, it is all about connecting with your breath. तो अगर आप सांस को होल्ड करके रख रहे हैं तो वो योगा नहीं है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस अंदर लेते रहें और सांस बाहर लेते रहें और मुस्कुराते रहें. We now have a special session on mindful eating during pregnancy, another important topic concerning women. Ms. Divya, you had mentioned that while preparing for pregnancy, there is a state of mind which you should be happy always. Is there a what is called a happiness hormone in us? Yes, of course we have happiness hormones. Endorphin, when we like we are doing some activity, somebody is coming and touching, hugging us with love and care, we feel happy. So if we are talking about like we have achieved something, we feel happy. Again, happy hormones releases. So there are dopamine, oxytocin, serotonin, these are happy hormones. जब हम खुश होते हैं या कोई achievement होता है, this is very common thing. When you achieve something, achievement doesn't mean that a big things in life. Small task, if you are able to complete that task in your life, you feel happy. Happiness is very important, not for pregnant women, for everybody to live life happily. And it's our mind. हमें ये समझना है कि हमें चाहिए क्या. We just run behind everything mindlessly. We don't know what we want to achieve. We are waiting for some big accomplishment to feel happy. But many a times you never reach. Before the time you reach there, you find that कि अरे पहले तो I was planning कि I will buy a WagonR car, but now time has gone. Now I want a Mercedes. खुशी कहाँ मिलेगी? The day you will buy WagonR and your neighbor is having Mercedes, आप फिर से सोचने लगोगे मेरे पास भी Mercedes होता, next time I will buy Mercedes. तो जो आपकी सोच है वो खत्म हो जाएगी. You need to feel happy, और ये state of mind है. Nobody can give you happiness. It's your state of mind, what you are looking for. छोटी छोटी चीजें में आपने किसी की help कर दी. Happiness is not getting something, is giving something. आपने किसी को दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को थैंक यू बोला, आप खुश रहोगे. तो इट्स लाइक माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिविंग इन प्रेजेंट, अभी क्या है, वी थिंक अबाउट पास्ट, वी ओवर थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, बट वी डोंट लिव इन प्रेजेंट. The next 1 hour will be on cervical cancer, prevention, diagnosis, causes, symptoms, vaccination, and management. Cervical cancer in India ranks as the second most frequent cancer among women between 15 and 44 years of age. एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के 1.3% मरीज हैं दुनिया भर, लेकिन इंडिया में 2.5, लगभग डबल है. कोई खास वजह क्यों वल्नरेबल है इंडियन वुमेन? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सर्वाइकल कैंसर के यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो वो भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सिर्फ कॉज है. उसके अलावा अनदर कॉजेज भी हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के. कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एथनिसिटी होती है. आप जो कह रहे हैं कि दुनिया में इंडिया में पर से हम कहें कि इस ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की जो आंकड़े हैं वो विश्व भर से बहुत ज्यादा है. उसका सबसे पहला कारण ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, बट ये जो ह्यूमन पैपिलोमा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है ये कोई नई वैक्सीन नहीं है, ये बहुत पुरानी वैक्सीन है. और आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में काफी हद तक ये मैंडेट है कि यंग फीमेल्स को ये वैक्सीन लगनी चाहिए.
इंडिया में हमारा वैक्सीन रेट जो है ये अभी भी बहुत कम है, इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है मैं कहूँगी, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई इंसेंटिव है या प्रोग्राम है। और इवन अगर ये सर्वाइवैक जो एक नई वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि इंडिया में इसकी समझ बहुत कम है। इसके अलावा अनदर फैक्टर्स भी होते हैं वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के, जो इस रेशो को बढ़ाने में मदद हमारे इंडिया का जो वो है आंकड़ा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे एथनिसिटी हो गई और आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गई। तो ये भी कारण हो सकते हैं अदर कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन में होने के। September was a landmark for India because the nation got its first cervical cancer vaccine, quadrivalent human papillovirus vaccine or QHPV. Can you explain more about this vaccine and how would you compare this vaccine with the other vaccines that are already available or were already administered earlier? Okay. The breakthrough that a cancer can have a vaccine against it was in itself a big breakthrough. So first it came monovalent vaccine. That means against one cancer-causing HPV virus, yes, we have the weapon to attack it. Then came bivalent, that is 16 and 18. So that was the next stage of evolution of the vaccine. Then they said 4 common types. In a whole family of HPV viruses, all the cousins put together, some are quiet, some are benign. They will not cause any harm to anybody. But some are very aggressively invading and malignant. Those are those numbers that we are referring to during the course of this talk. So 16-18 was the bivalent vaccine. Then it came quadrivalent. That means against 4 different notorious numbers, we can attack it. So this has stayed for the longest time with all the studies done, etc. But we also recognize there is a small gap here because there are another 3-4 types of viruses which may not only be responsible for cervical cancer, but they're also responsible for warts, they're also responsible for anal cancers, they're also responsible for oropharyngeal cancers, but they belong to the HPV family. So the 9-valent, that is the new kid on the block, the latest one says that if you attack these 9 HPV viruses, these particular numbers by giving this 1 dose or 2 doses or 3 doses, whatever, the 9-valent is the latest development which covers a whole umbrella. But we must not let the best come in the way of the good. That's what we always believe. And if the costs of 9-valent are going to be huge, and just to cover a small little extra bit, we say we can't afford it, so we can't even do anything for you. That's a clear no-no. 4 has stood the test of time. The new one, which is Make in India, or which is going to be available, we hope, at a very reasonable cost, so that cost doesn't become a issue or cost doesn't become a barrier for implementing this vaccination program, then that quality is good enough as any other quadrivalent vaccine available in the world, because those 4 will anyhow be attacked, and more than about, a large number of cervical cancer, virus causing viruses will be anyway under the control of the, fighter cells developed due to this vaccination. हाँ जी, डॉक्टर निशा भट्टागर, आपने अर्ली स्टेज की बात की, तो कितने स्टेजेस होते हैं इसके? Usually it is a only inflammatory smear, then pre-cancerous stage, then early stage, just when you detect few cells, squamous metaplasia is there, and then fully fledged cancer development is there. Then it is stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, that is FIGO classification. उसके लिए हम जो है स्टेजिंग करते हैं, सेल्स लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें लैप्रोस्कोपी करके उसका स्प्रेड देखना पड़ता है, हमें MRI करवाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि लिम्फ नोड्स कितनी इन्वॉल्व हैं, क्या वो फैल गया है लिम्फ नोड्स के जरिए, उसके हिसाब से हम फिर स्टेजिंग डिसाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. यूजुअली क्योंकि अर्ली डिटेक्शन है, फुल फ्लैश्ड स्टेज 4 के केसेस हमें बहुत कम देखने मिलते हैं. दूसरा, एक जो आपने एक और सवाल पूछा था कि इंडिया में क्यों ज़्यादा 2.5% इंसिडेंस है. मेरा मानना ये है कि इंडिया में अभी भी
फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है स्पेसिफिकली रूरल पॉपुलेशन में फॉर डूइंग पैप स्मीयर. सिंपल टेस्ट, एक सिर्फ आपको ब्रश से स्मीयर लेकर के चेक करना है. तो भी मैंने रूरल मेडिकल कॉलेज गोंदिया में 1 साल काम किया था. आप यकीन मानिए सिर्फ रूरल एरिया में ही हमें फुल फ्लेज कैंसर स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं. क्यों? क्योंकि लेडीज वहाँ जाती ही नहीं है, वो चेक कराती ही नहीं है. ब्लीडिंग होती रहती है, वो लोकल कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं. वो एक सिंपल सा सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट भी नहीं कराते पैप स्मीयर. सो लेट स्टेजेस हमें ज्यादातर रूरल केसेस में, रूरल एरियाज में देखने को मिलता है. No, but I would like to have your take on this experimental sex that's happening in societies, especially in large metros. So what's your take on this? Because Delhi is also opening up very fast, like Bengaluru and other places, and you see younger girls going for experimental sex. So is this a danger across? And if so, how do you overcome it? Sex education is something I think that's still a taboo in India. We don't talk about, we don't advocate. I think that should begin from a household. Our mothers should teach us to their children how to manage this thing on. So I think a proper education should be given to our younger ones and young adolescents, so that this is being practiced. So they should know where things go wrong, how they can be prevented. Even for that matter, like most of the males, if you come across barrier methods, they even don't want to use it. So that should be actually properly advocated. And I think for this, creating this awareness, we cannot only rely on the government. So I think all the public sectors and especially the NGOs will have a greater hold and take on it.